हेलो मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे इज ट्यूसडे और आज हम लोग का सेशन है। आई होप दोज हु आर रेनबो यूजर्स ऑफ मल्टी एसेट सब्सक्राइबर टू मल्टी एसेट ट्रेडिंग विद एसडी रेनबो वेव, लाइक आई मीन, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये जो वीडियो वैसे है, इसमें हम लोग आज हाई रिस्क रिवार्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हाई रिवार्ड अपॉर्चुनिटीज with a great comeback. If you go to my course, this is if you are subscribed to this particular course, then you are very welcome to join today's class at 1:30 p.m. Largely today's topic will be stocks. So आज जो बिफोर आई डू गो थ्रू, आई थिंक आप सब लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इसमें मैं कुछ हाई रिस्क रिवार्ड अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ with the rainbow setup. Now in the rainbow setup, sometimes ये जो stocks है, usually ये काफी popular name थे, say one time they were good names. Like Suzlon. Suzlon has been a very old name. पहले बहुत बढ़िया नाम था उनका, बिग आईपीओ हुआ था, उसके बाद इट रिमेन बैटर्ड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये यूजुअली वेल नोन नेम्स है, जो यूजुअली पब्लिक नोन नेम्स है, का स्टॉक बैटर्ड हुआ है। ये यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनका। तो इनमें जब एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बाई सिग्नल आ रहा है ना, तब रिस्क रिवॉर्ड बहुत बहुत फेवरेबल रहता है फॉर अ बिग रन। हम लोग नहीं जानते हैं कि हाउ फार वो जाएगा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ। सिंस हम लोग नहीं जानते, हम वी कैन रिलाई ऑन द रेनबो स्ट्रक्चर। और रेनबो स्ट्रक्चर बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। यूजुअली इफ वन ब्रेक्स, it's a good break in the rainbow long term chart and it has been a battered, very likely it reaches towards this mountain top resistance. Now यहाँ पे जब मैं सजलॉन की बात कर रहा था, सजलॉन दैट टाइम वाज 10 रुपीज, 10 रुपीज, 12 रुपीज, 14 रुपीज, ये सब जगह पे। एंड दैट वाज आल्सो विजिबल इन द वीकली चार्ट। ये जो गेम्स है, ये यूजुअली हम लोग मंथली और वीकली के कॉम्बिनेशन में खेलते हैं, टू रिमेन अवेयर ऑफ एंट्री एग्जिट्स। सो और ये सब जो स्टॉक्स है, सिंस इसमें हाई रिस्क रिवार्ड है, इनिशियल रिस्क है बट रिवार्ड बहुत ज्यादा है, तो यूजुअली ये जैसे ही ड्रॉप खाता है, मतलब नीचे आता है सजलॉन, समटाइम्स आप लोग देखोगे ये जो फेज था, इसमें अपर सर्किट हिट कर रहा था, उसके बाद ही एक ही दिन बहुत नीचे आ गया, लोअर सर्किट हिट किया, पीपल गॉट स्केर्ड। सो ये सब जैसे ही वो नीचे आ रहा है, मतलब बिग फॉल देख रहे हैं, तब जाके उसको परचेज करना सही होता है। व्हेन वी आर विद द ओरिजिनल आउटलुक, सही है कि हम लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं, विच गेम वी आर प्लेइंग। We are playing a very long game यहाँ पे, maybe 1.5 to 2 years could be. Usually this is the case, 1 से 2 साल लगेंगे, and the return is very good. It usually can minimum go for 35, say 35% to around 700, 500, 400, 500. Means it's a multi-bagger, multi-times gain. एंड यूजुअली ये जो स्टॉक्स हैं, दीज आर पॉपुलर नेम्स, नॉट अ वेरी कॉमन, आप लोगों को बहुत मिलेगा व्हेन द मार्केट इज डाउन, नॉट इन दिस फेज। इन द करंट फेज बहुत ही कम स्टॉक मिलेंगे जो इन फेज में जा रहे। सो वन ऑफ देम वाज सजलॉन, और सजलॉन में अभी भी पोटेंशियल है, इट वाज अ गुड ब्रेक। हमें खरीदना है तो वी हैव टू लुक फॉर वीकली बाई सपोर्ट। ये रहा बाई सिग्नल के साथ बाई सपोर्ट इस दिन, और बाद में ब्रेकआउट तो चलते ही जा रहा है एज पर द रेन। वीकली और मंथली के कॉम्बिनेशन में ये गेम खेला जाएगा। यूजुअली जो टारगेट्स होते हैं वो रहे फ्लैट लाइंस। ये जो फ्लैट लाइंस, उसका ब्रेक होते ही ये और भी अच्छा हो गया। नेक्स्ट जो थोड़ा मार्जिनल आ रहा है इज टुवर्ड 70 एंड मेनली हियर, ये जो लेवल्स है टॉप लेवल्स, इसके आसपास थोड़ा बहुत बट ज्यादा नहीं। द मेन टारगेट जो रहता है इस ये सब स्ट्रक्चर में, कोई भी मेजर फ्लैट लाइन है तो वो वाला। यहाँ पे पर्टिकुलर सजलॉन के केस में कोई
फ्लैट लाइन है नहीं. So I'll not be very surprised if I ultimately find the stock somewhere around 200 rupees, which is still about 4 times gain. But from the original where it was showing, it was of more than 12 times the gain. तो ये सब गेन के लिए इनिशियली जो स्टॉप लॉस होता है उसको होल्ड करना पड़ता है एंड एक फिक्स रिस्क लेते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है. नो वन कैन से दैट इट विल बी राइट. तो ऐसा मानते हैं कि वो जो स्टॉप लॉस वो मेरा लॉस हो गया, वो मैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम पकड़ लिया एंड मैं ये थ्योरी पे चलूंगा कि इट इज ओवर अ लिटिल ओवर टाइम प्रूव होना चालू होगा कि मेरा थ्योरी सही है एंड इट इज गोइंग टू गिव अस वेरी बिग रिटर्न. यूजुअली इसमें कोई फंडामेंटल इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज फंडामेंटल कैन डिस्ट्रैक्ट एट टाइम्स. आई एम नॉट सेइंग फंडामेंटल नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज कंप्लीटली अ टेक्निकल बेस. फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे यहाँ पे एक फंडामेंटल न्यूज आया बट अल्टीमेटली इट वाज यूज्ड बाय द बिग प्लेयर्स टू एंटर मोर पोजीशंस. So in such, these are different cases. So here the fundamental news, earnings, these are delayed data. So delayed data पे हम लोग rely नहीं कर सकते. Now there are some opportunities जो बन रहे हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो रेनबो सेटअप यूजर्स आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता था. One is I'm not a big fan of this stock in terms of fundamental. But chart structure is similarly just like Suzlon, it is too good. It has a very low, it has made base. We had a buy signal. You can see we had a buy signal. This is the closest buy signal to the orange line. These were very, very far buy signal, which were likely to fail. This is one of the closest, and main importantly, this has broken the empty line, first level of resistance. So nothing is there to stop it. The only thing is, even this stop, if I consider the line chart, though I should not consider the line chart actually, this stop is clear, 13 rupees. So this one is looking like that, yes, this is can break. If this goes, obviously our stop loss will maintain. That is 11 rupees भी नहीं, around say 12.5, मतलब almost 5.5 रुपए के आसपास, 5.5 रुपए के आसपास is the stop loss. ऐसे 5 भी नहीं, around 4.5, sorry, 4.5 rupees ही मान लेते, 5 रुपए अपना stop loss है. And the target is for this one, Vodafone Idea, is that this area, this flat line is the main. यहाँ पे struggle करेगा Vodafone. अगर so इसके आसपास closest to means 37 area के आसपास is the Vodafone का Idea की target, which is still almost 100% return. So you understand what kind of remove we are looking for. Like we are here to take a loss about 30% and we are looking for 100% gain. Now once the theory is proven to be right, जो यहाँ पे already buying में जो theory बनाया, that is right, कि it will touch the empty line and likely to break. It broke, took some resistance and now breaking higher again. Though real chart में it looks like a correction, these corrections are opportunities to enter these kind of, ये सब stock हम लोग breakout पे नहीं, जो drop होता है, क्योंकि we want to keep the buy price low. क्योंकि ओरिजिनल थ्योरी जो बन रहा है वो बन रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट देख के. दिस इज द मंथली चार्ट. दिस इज नॉट फॉर एवरी स्टॉक. इट इज नॉट लाइक यू सेट अप एवरी स्टॉक, यू स्टार्ट लुकिंग एट मंथली like Mazdog. This will be crazy. You won't be find an entry. So stick to our TMPV strategy for this, but there are some stocks which are like this, which are much awesome position, in quite clear position. यही फायदा है रेनबो सेटअप and this one का. We have a clear picture कि this is touch of the line is the next target. And finally here, and the line is a slanting one.
मतलब कोई फ्लैट लाइन नहीं, ये स्लैंटिंग लाइन से ब्रेक करेगा। स्लैंटिंग लाइन से ब्रेक करने का यूजुअली मतलब होता है इट इज गोइंग टू रीच द माउंटेन टॉप, बट बीच में स्ट्रॉन्ग फ्लैट जोन। So if it at 17, suppose, I don't know if it will reach or not, but if it does, 72 to say 80 region, it will be several fold gain. And the holding periods I have seen for these are usually 1.5, 1 year to 2 year period. The unfortunate part is that I think we are in a recessionary cycle. So I don't know, maybe it will move quite fast. Because suppose even if you are in a, as per me, if you are in a delayed recessionary period, I do not see any major thing beyond 2025, March, April, or say June period. It is very difficult to project time, but so far it is very difficult to think that beyond it will be delayed beyond that. तो उसके वहां तक तो so it doesn't have many months on their hands before if we really are in that cycle. But chart structure wise, these are awesome. Unfortunate part for idea is कि this is also not a flat line की जो खराब बात है अगर ये flat line होता तो हमारे पास एक definite stop loss आ जाता even if it's say 11 जो definite इसको support करता. There is no significant flat line, it's somewhat tilted. While it has opportunity, it has also risk associated. That's why we will prefer to maintain the stop loss. Here, maximum stop loss is 11. मतलब maximum risk आज ₹5.5 का ही ले सकते, not more than that. And also the minimum target we are looking for are these area. And it can go for once this part is clear. यहाँ पे profit booking ही होगा जैसे Suzlon में आप देखें, it came down. And after that, if it breaks, this zone would be the main target area. So that's how this is actually the way to look at the battered stock. So this was idea, Vodafone idea. I hope आप लोगों को ये idea अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा है, don't forget to like and subscribe. All the best to all of you from my side. And as always, happy trading.